So this is the question number 41 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, a code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, first let's do the line numbering, then we'll try to figure out what each and every line is doing. तो लाइन नंबर 1 में क्या है, आपका एक डिक्शनरी डिफाइन करी गई है, इसके अंदर 1 2 एंड 3 इन डिजिट्स आर द कीज एंड 1 2 3 इन स्ट्रिंग्स आर योर वैल्यूज. फिर सेकंड लाइन में क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करी गई है ना. लाइन नंबर 3 में क्या है, डी डॉट आइटम्स के अंदर क्या कर रहे हो आप, के कॉमा वी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी रिमेंबर या यू नीड टू बी अवेयर कि डी डॉट आइटम्स की वैल्यू क्या आएगी. तो डी ऑफ आइटम्स विल बी इन द लिस्ट ऑफ टपल. तो टपल की वैल्यू क्या आएगी, 1 कॉमा 1 in string, then followed by another tuple 2 comma 2, and then followed by again another element which is 3 comma 3. Okay, now it will be list of tuples. Okay, now इस केस में k की वैल्यू क्या होगी, 1 2 and 3, एंड v की वैल्यूज क्या होंगी आपकी. तो लेट मी डिटरमाइन k की वैल्यू क्या है, 1 2 3, और v की वैल्यू क्या है आपकी 1 2 and 3. ठीक है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इन लाइन नंबर 4 यू आर चेकिंग, आपका लूप कितनी बार चलेगा, आपका 3 बार. नाउ हर इटरेशन में क्या चेक कर रहे हो आप, फर्स्ट इटरेशन में क्या चेक कर रहे हो कि v ऑफ 0 इक्वल्स टू t है, तो अगर तो क्या करना है आपको, अपेंड करना है k को लिस्ट के अंदर. तो सिमिलरली कैपिटल T किस केस में है हमारे पास, इस केस में और इस केस में आपको अपेंड क्या करना है, 2 और 3. तो लिस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट 2 ऐड होगा, फिर देन 3 ऐड होगा. Then at line number 6, what you need to do? You need to print 2, 3. If you run this one on the ID, you will see कि output क्या है आपका 2, 3. Hence, for this one, option number C is the correct one. Now, based on the similar concept, I have a practice question for you. You need to tell in the comment box what will be the right answer for this one. Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then, thanks for your time.